1 घंटा में इतना सारा चीज वो थंब दिखाने के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट हो गया है। अच्छा मतलब स्टार्ट किया। Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss Block 3 of Working Capital Management, that is financing of working capital. I have discussed previously concept and determination in Block 1 and management of current assets in Block 2. So, financing of working capital, this block contains 4 units. Continuously Unit 8, Theories and Approach. Unit 9, Payables Management and Management of Current Assets in Block 2. Principles and Practices. And Unit 11, Other Financing of Working Capital Finance. This block contains theories and approach. Continuously Unit 8, Theories and Approach. Of this block, Unit 9, Payables Management. Objective of this unit, principles and practices are to provide you an understanding as to the policy making in the area of this block, working capital management and approach. To examine the different approach to working capital management of this block, Unit 9, to highlight the impact, objective of this assess management and financing on working capital policy are to provide you an understanding and important policy making in the area of topic this block, working capital management and approach. To examine of the different units to introduction of creation of value through working capital management impact approach of working capital investment approach to financing working capital to provide and effect of financing on returns on investment that is the area of topic this block, working capital introduction of this section of this present follow focus on the theoretical issue working capital determination also the practice followed by approach to financing working capital creation of value through working capital management investment. So the process of maximizing the market price of the company introduction of this occurs when the financial manager does something present follow equity shareholders cannot do for themselves. Major concentration has been on the following. First, what creation of objective function working capital management, working capital maximizing the market price of how to create value on working capital. This occurs when the financial manager scope to lay down time to shareholders on working capital for themselves. How do this return major concentration has been on the following. First, what these suggestions are very important for defining working capital practice the market price of how to create value on working capital. Creation of value through working capital management. Creation of value has been stated to be the objective of the company. The profit maximization, the wealth maximization, and the quality management are very important. So, how to create working capital practice value through working capital management is the importance of working capital management. Profit maximization means the main objective of a business organization is to maximize profit. Wealth maximization, there are so many ways
company establish certain main objectives, that is for profit maximization. More to more profit earned करना. This is very important objective of the business. Either it is legal or illegal. But profit maximization में आप देखेंगे there are so many ways. Either it is legal or illegal practices. Companies establish more to more profit earn. जो करना है वो अगर इलीगल प्रैक्टिस पे जा रहे हैं तो आगे फ्यूचरिस्टिक आपके लिए बेटर नहीं होगा, फ्यूचर आपके लिए नहीं होगा. लाइक इन केस स्टडी ऑफ नेस्ले इंडिया लिमिटेड तो मैगी ने बोला था नो एमएसपी. मैगी के रैपर पे आप देखेंगे नो एमएसपी, नो बोलो चलते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अजीनोमोटो. अगर इलीगल प्रैक्टिस पे जा रहे हैं बट लैबोरेटरी टेस्ट जब करवाया गया तो उसमें पाया गया कि उसमें एमएसजी इन्वॉल्व, मेंटल डिसऑर्डरिंग के लिए सबसे बड़ा फैक्टर. तो मैगी ने बोला था, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितना बड़ा डंपिंग हुआ था, सारे मैगी को डंप कर दिया गया था. ह्यूज लॉसेस अकर्ड इन दिस टर्म जो इलीगल प्रैक्टिसेस. Then more to more profit maximization disordering के लिए सबसे बड़ा factor is very important. So आपने देखा होगा legal practices, not illegal practices. And second one is wealth maximization. Illegal practices. The increment of market value of equity is called wealth maximization. It is main objective of the company. Is very important. आप देखेंगे कोई भी कंपनी लीगल प्रैक्टिसेस, नॉट इलीगल प्रैक्टिस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाई है, बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट. द इंक्रीमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो वर्किंग कैपिटल का क्या रोल है? रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन क्रिएशन ऑफ वैल्यू. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे आपके पास वर्किंग कैपिटल की सफिशियंसी है तो आप इजीली प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं. अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड काफी हाई है. शॉर्ट टर्म इंक्रीमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वर्किंग कैपिटल का क्या रोल? इट इंक्लूड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश होता है, कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होता है, आप इजीली प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो वो सोसाइटी से ही सारे इनपुट को लेते हैं और अल्टीमेटली सोसाइटी को ही वो प्रोवाइड करते हैं. देन सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करना दैट इज नॉट फेयर. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इट इज इलीगल प्रैक्टिस. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जब सोसाइटी आपको इतना इनपुट दे रहा है, सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा है, देन आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी सोचिए. दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अल्टीमेटली सोसाइटी को ही वो प्रोवाइड करते हैं. सो CSR इज इम्पोर्टेंट फैक्टर सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करना और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. इट इज इलीगल प्रैक्टिस. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जब सोसाइटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जितना प्रॉपर वे में आप मैनेज करेंगे, आपका वैल्यू ऑफ द फर्म उतना आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी सोचिए. दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अल्टीमेटली सोसाइटी. थर्ड वन इज पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू. This is an important technique to evaluate the most profitable project in the company. There are so many projects available in the company. बट किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, किसमें वर्किंग कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना है, दैट्स मैटर. थर्ड वन इज पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको ये बताएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट मोर प्रॉफिटेबल है, मोस्ट प्रॉफिटेबल है फॉर द बिजनेस पॉइंट. सो मेनी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल इन द सो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, किसमें डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो पॉजिटिव
इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट मींस कैश आउटफ्लो, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो, और उस प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। डिस्काउंटेड कैश इन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट पीरियड इनिशियल इन्वेस्ट जितना भी आपके पास कैश इनफ्लो हुआ है, अगर आउटफ्लो से मैक्सिमम होगा तभी वो प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करें, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, अदरवाइज वो नेगेटिव इम्पैक्ट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो और कैश आउट जितना भी आपके पास। So this technique is very important for the evaluation of maximum project, तभी वो प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करें, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट one is approach to working capital investment. Value is equal to discounted cash working capital investment. There are two approach to clarify the working capital investment. That is, one is Walker's approach and second one is trade-off theory. Next, Walker approach. Early in 1964, Ernest W. Walker has developed a four-part theory of working capital. It includes four types of theories. He has laid down that a firm's profitability is determined in part by the way its working capital is managed. First principle, this is concerned with the relationship between the levels of working capital and sales. In 1964, Ernest W. Walker has developed a four-part. Its principle is that if working capital is varied relatively to sales, the amount of risk that a firm assumes is also varied, and the opportunity for gain or loss is increased. So this theory is basically related to the working capital and sales. Second principle is capital should be invested in each component of working capital as long as the equity position of the firm is varied, and the opportunity. This principle is based on the concept that each rupee invested in fixed or working capital should contribute to the net worth of the firm. Third principle, the type of capital used to finance working capital directly affects the amount of risk that a firm assumes as well as the opportunity for gain or loss and cost of capital. It is indisputable that different types of capital poses varying degrees of risk. And the last, fourth principle, the greater the disparity between the maturities of a firm's short-term debt instruments and its flow of internally generated funds, the greater the risk, and vice versa. And second one is trade-off approach. All decisions of the financial manager are assumed to be geared to maximization of shareholders' wealth. That is also called value of the firm. That is also called wealth maximization. And working capital decisions are no exception. Accordingly, risk-return trade-off characterizes each of the working capital decisions. Risk-return trade-off is a technique to reduce the risk and maximize the return. So it is an optimum level of working capital which maximize returns and minimize the risk. Here there are two types of risk inherent in working capital management, namely liquidity risk and opportunity loss risk. I have already discussed in previous class what is liquidity risk and opportunity loss risk. Liquidity risk is the non-availability of cash to pay a liability that falls due
even though it may happen only on certain days. It can cause not only a loss of reputation, but also make the work condition unfavorable for getting the best terms on transaction with the trade creditors. आपने ट्रेड क्रेडिटर्स को अगर ट्रेड क्रेडिटर्स के यहाँ से आपको अगर मिला है ऑन क्रेडिट गुड्स आपको सप्लाई किया है और बाद में अगर आप उसे पैसा नहीं देते हैं तो उस ट्रेड क्रेडिटर का क्या होगा? लिक्विडिटी रिस्क होगा। आप भी आपका बिजनेस है और आपने ऑन क्रेडिट सेल किया है, दैट मींस डेटर जनरेट होगा और डेटर जनरेट होने के कारण अगर वो टाइमली पेमेंट आपको नहीं करता है, दैट मींस वहां पे लिक्विडिटी रिस्क अवेलेबल होगा। The other risk involved in working capital management is the risk of opportunity loss. That is, अगर आप डेटर क्रिएट नहीं करेंगे, मीन्स ऑन क्रेडिट सेल आप नहीं करेंगे, देन वहां पे आपको कस्टमर का लॉस होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, आपसे ज्यादा कस्टमर कनेक्ट नहीं होंगे। The risk of opportunity loss, that is risk of having too little inventory to maintain production and sales, or the risk of not granting adequate credit for realizing the achievable level of sales. In other words, it is the risk of not being able to produce more or sell more or both, and therefore not being able to earn the potential profit, because there are not enough funds to support higher inventory and book debts. So next one is approach to financing working capital. Next topic is approach to financing working capital. There are three approaches available in this concept. First is aggressive approach, second is conservative approach, and third one is moderate, hedging or matching approach. I have already discussed about this approach in previous classes. हमने आपको बताया था कि अग्रेसिव अप्रोच, आप वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करते हैं। सपोज 1 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की और आप वहां पे 1 करोड़ रुपीज होल्ड करके रखे हैं, दैट मींस 99 लाख रुपीज का जो वहां पे होल्डिंग हो रहा है, दैट इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, बिकॉज एवरी कैपिटल हैज अ कॉस्ट। सो आप अगर फंड को रखे रहेंगे, होल्ड करके पैसे को बचाए रखेंगे, तो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के कारण आपकी इफिशियंसी, प्रॉफिट का लेवल आपका जो है नीचे गिरेगा, डिक्लाइनिंग स्टेज पे जाएगा। तो अग्रेसिव अप्रोच में क्या होता है कि आप जितना रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही कम आप होल्ड करके रखे हैं पैसा, और जो रिमेनिंग वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया। इससे क्या होगा कि अभी का जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसको आप मेंटेन करें और रिमेनिंग जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है उसको आप इन्वेस्ट कर दें डिफरेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। वहां से जो प्रॉफिट अर्न होगा, रिटर्न अर्न होगा, वो आपके प्रॉफिट में एड ऑन हो जाएगा। So the aggressive strategy is one of the approach of working capital management, wherein the company's investment in working capital are kept at a minimum level, that is limited investment in current asset. This means that the entity hold lower inventory level, follow a strict credit policies, keeps less cash balance, etc. Under this approach, current assets are maintained solely to just meet the current liabilities without cushioning of any variation in working capital requirements. The aggressive approach suggests that the entire estimated requirements of current assets or working capital should be financed from short-term funding sources. It says that even a part of fixed assets investment is to financed from short-term sources.
सो अग्रेसिव अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप देखेंगे कि जितने भी जो प्रोएक्टिव पीएसयूज हैं, प्रोएक्टिव पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लाइक टाटा मोटर्स लिमिटेड, अडानी अडानी लिमिटेड, ये सारी कंपनीज अग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करते हैं बिकॉज कि एवरी कैपिटल हैज अ कॉस्ट। सो कैपिटल जो आपके पास अवेलेबल है उससे मैक्सिमम यूटिलाइज करके मैक्सिमम रिटर्न आप अचीव करें, ये आपकी कंपनी के लिए बेटर पोजीशन होगा। सेकंड वन इज कंजर्वेटिव अप्रोच। इन कंजर्वेटिव अप्रोच हमने बताया था आपको कि एस्टिमेशन, मान लो वर्किंग कैपिटल का 1 लाख रुपीज है और वहां पे आप 1 करोड़ रुपीज होल्ड करते हैं, दैट मीन्स 99 लाख रुपीज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। दैट इज कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल अप्रोच। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच। सो 99 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा आप होल्ड करके रखे हैं उससे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होगा और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को हैम्पर करेगा बिकॉज इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं वो प्रॉफिट में से ही पे करते हैं, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका नीचे गिरता चला जाएगा, डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाएगा। एंड थर्ड वन इज मॉडरेट हेजिंग और मैचिंग अप्रोच। सो दिस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितना एस्टिमेशन आपने किया है वर्किंग कैपिटल का, आपको उतना ही होल्ड करके रखना है, ना आपको एक्सीडिंग पॉइंट पे जाना है ना ही आपको बिलो पॉइंट पे जाना है। दैट मीन्स 1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 1 लाख रुपीज आपको होल्ड करके रखना है, ना तो उसको कहीं इन्वेस्ट करना है और ना ही आपको शॉर्टेज में जाना है, नीचे जाना है। सो दिस अप्रोच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल: अग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच एंड मॉडरेट, हेजिंग और मैचिंग अप्रोच। द नेक्स्ट टॉपिक इज पेबल्स मैनेजमेंट. The objective of this units are unit 9, payables management. The objective of this unit are to first explain the significance of payables as a source of finance. Identify that the factor that influence the payables quantum and duration. And third one is highlight the advantage of payable and provide hints for effective management of payables. A structure of this units are introduction, payables, their significance, types of trade credit, determinants of trade credit, cost of credit, advantage of payables, effective management of payables. So next slide on the screen is introduction. What is accounts payable? Accounts payable management is one of the important business processes that help in managing payable obligations of the entity in the most effective manner. Account payable is the amount that the entity has to pay to its suppliers or vendors on the account of goods and service received. Trade creditors or payables constitute a major segment of current liability in many business enterprises, and they primarily finance inventory which form a major component of current asset in many cases. So आप कहीं से भी ऑन क्रेडिट गुड्स लाते हैं, ऑन क्रेडिट मशीन लाते हैं, ऑन क्रेडिट कुछ भी परचेज करते हैं, दैट वहां पे ट्रेड पेबल्स क्रिएट होता है। दैट मींस यू हैव टू पे अमाउंट अंडर एग्रीमेंट। जिस एग्रीमेंट के थ्रू आपने ऑन क्रेडिट परचेज किया है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसी टाइम पे पे करना होगा। आप पे करेंगे तभी आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा रहेगा। टाइम टू टाइम आप ईएमआई पे करते हैं, टाइम टू टाइम आप अपना इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस बेटर होता है। क्रेडिट वर्दीनेस बेटर होने के कारण जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, आपको ऑन क्रेडिट सेल करना पसंद करेंगे। अब यहां पढ़ना टाइप्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। बेसिकली 3 टाइप्स अवेलेबल इन ट्रेड क्रेडिट:
First is open accounts, promissory notes, and bills payable. Next, determinants of trade credits. It is very important topic in this segment. Determinants of trade credit. First is size of firm. Second is industrial categories. Third one is nature of product. Fourth one is financial position of seller, financial position of the buyer, degree of risk and cash discount, and last one is nature and extent of competition. So size of firm is important determinants of trade credit. A smaller firms have increasing dependence on trade credit as they find it difficult to obtain alternative sources of finance as easily as medium or large sized firms. At the same time, larger firms that are less vulnerable to adverse turn in business can commence prompt credit facility from supplier. While smaller firms may find it difficult to sustain credit worthiness during periods of financial strains and may have reduced access to credit due to weak financial position. So size of the firm is matter for trade credit. मीडियम फर्म, लार्ज फर्म, स्मॉलेस्ट फर्म, किस तरह की फर्म है उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रेड क्रेडिट आपको कितना प्रोवाइड किया जाएगा, कितना मिलेगा. इंडस्ट्रियल कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस show varying degree of dependent on trade credit. In certain lines of business, the prevailing commercial practices may stipulate purchase against payable in most cases. Monopoly firms may insist on cash on delivery. They could be instances where the firm's inventory turnover every fortnight, but firm enjoy 30 days credit from suppliers, whereby the trade credit is not only finance the firm's inventory, but also provides part of the operating funds or additional working capital. So industrial categories is main determinants of trade credit. Next one is nature of product. Product that sell faster, that means fast moving consumer goods, or slower, that is slow moving consumer goods. So product that sell faster or which have higher turnover may need shorter credit term. Product which have slower turnover take longer to generate cash flows and will need extended credit items. Financial position of seller. Obviously, कोई भी ट्रेड क्रेडिटर अगर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है या फिर ऑन क्रेडिट गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो फर्स्टली वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को देखने में इंटरेस्टेड रहता है. आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन जितना बेटर होगा, क्रेडिट उतना ही इजीली आपको मिल जाएगा. फाइनेंशियल पोजीशन जितना बेटर नहीं होगा, दैट मींस क्रेडिट वर्दीनेस जितना बेटर है उतना अच्छा आपको ट्रेड क्रेडिटर आपको प्रोवाइड करेगा गुड्स. और जितना क्रेडिट वर्दीनेस आपका खराब है, आपका ट्रेड क्रेडिटर उतना बेटर तरीके से आपको प्रोवाइड सर्विस नहीं कर पाएगा ऑन क्रेडिट बेसिस. सो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सेलर इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट. सो नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बायर. Buyer's credit worthiness is an important factor in determining the credit quantum of period. So financial position of the buyer, that is the better determinants for the using the funds at an effective rate of interest higher than that of alternative sources of finance available.
By providing cash discount and inducing good credit risk to pay within the discount period, the supplier will also save on the cost of administration connected with keeping records of dues and collective overdue accounts. Nature and extent of competition. There is last determinants of trade credit. Our monopoly status facilitates imposition of tight credit term, whereas intense competition will promote the tendency to liberalize credit. Newly established companies in competitive field may more readily resort to liberal trade credit for promoting sales than established firms which are more formal in deciding on credit policies. So these factors, these determinants is very important for trade credit. और ट्रेड क्रेडिट इन सभी फैक्टर को इन्फ्लुएंस भी करता है और खुद भी इन्फ्लुएंस्ड होता भी है उससे. सो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेबल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट concept, stretching accounts payable. So it is normally assumed that the payment to the supplier is made at the end of due date. However, a firm may postpone payment beyond this period. This type of postponement is called a stretching or leaning on the trade. The cost of a stretching accounts payable is twofold: the cost of cash discount foregone and the possible deterioration in the credit rating. If a firm stretches its payables excessively so that its payables are significantly delinquent, its credit rating will suffer. Supplier will view the firm with apprehension and may insist on rather strict terms of sale. Although it is difficult to measure, there is certainly an opportunity cost to deterioration in the firm's quality of payment. So stretching accounts payable is very important concept for. Yeah. Next unit is unit 10, bank credit principle and practices. So the objective of this unit are to explain first the basic principle of sound lending. Second one is the style of credit, their merits and demerits. The style of credit means debt capital, equity capital, long-term borrowing, short-term borrowing, short-term loan, long-term loan, cash credit, etc. So third objective is the types of security required and the modes of creating charge, and the last one is the methods of credit investigation. So the structure of this unit are introduction, principle of bank lending, style of credit, classification of advances according to security, modes of creating charge over assets, secured advance, purchase and discounting of bills, non-fund based facilities, and credit worthiness of borrowers. So this unit contains this structure. Introduction part involve what is bank credit. Bank credit is usually referred to as a loan given for business requirement or personal need to its customers, with or without guarantee or collateral, with an expectation of earning periodic interest on the loan amount. The principal amount is refunded at the end of loan tenure, duly agreed upon and mentioned in the loan covenant. So बैंक क्रेडिट बेसिकली बैंक का जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होता है वो लोन प्रोवाइड करना है और लोन प्रोवाइड करने के बाद उससे सर्टेन इंटरेस्ट इनकम के तौर पे रखना है.
और लोन का कैटेगरी हो सकता है कि आपको कोलेटरल के अगेंस्ट में दे या स्टॉक के अगेंस्ट में दे, दैट मींस वो सेफ्टी पर्पस ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप देखें कि विदाउट एनी कोलेटरल अगर लोन प्रोवाइड किया है तो वहां पे बैंक थोड़ा सा अनसेफ जोन में होगा। So in today's world, demands are continuously increasing, but the means to fulfill those demands are limited. Hence, borrowing money will enable us to finance the varied need of a business, profession, and personal. Principle of bank lending. Principle of bank lending involve certain points. That is, first is principle of safety. The most important principle of lending is to ensure the safety of the fund lent. It means that the borrower reaps the amount of loan with interest as per the loan contract. The ability to repay the loan depends upon the borrower's capacity to pay as well as his willingness to repay. लोन जो बैंक प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं ये रिस्क जोन में तो रहता ही है। तो फर्स्टली वो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देती है कि कहीं वो लोन हमारा एनपीए डिक्लेयर ना हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर ना हो जाए। सो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बैंक लेंडिंग। सो सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। In other aspect, in view of investors, जब इन्वेस्टर कहीं पे अपने सेविंग को मोबिलाइज करता है, सेविंग को जब पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करता है सेविंग अकाउंट्स में या फिक्स डिपॉजिट्स में, तो मेन प्रायोरिटी रहता है उसका सेफ्टी, प्रिंसिपल अमाउंट उसका सेफ है या नहीं। अब देखेंगे कि कभी कभी जब कोई मिस लीडिंग कर रहा है या फिर मेल प्रैक्टिस कर रहा है कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो वहां पे लोगों को लगता है कि बस उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाए, इंटरेस्ट मिले या ना मिले। दैट एग्जांपल आप सहारा इंडिया का देख सकते हैं कि वहां पे जितने लोगों ने पैसा लगाया था, इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे नहीं कर पा रही है कंपनी। So principle of safety is a very important principle. Second one is principle of liquidity. Banks mobilize fund through deposits which are repayable on demand or over short to medium periods. The banker therefore lend his funds for short period and for working capital purposes. Liquidity means कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना फास्टली कैश में कन्वर्ट होगा, दैट इज लिक्विडिटी। आप अपने फीचर्स, अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई आपको लोन दे रहा है वो यही सोच कर देता है कि उसकी लिक्विडिटी शॉर्टेज ना करे, या लिक्विडिटी जब तक बना हुआ है तो उसको इजीली कैश में कन्वर्जन किया जा सके। अगर कहीं रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तेजी से उसका विड्रॉ हो सके। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप पैसा कहीं पे एफडी डाल दिए हैं और फिक्स डिपॉजिट में पैसा आपका जमा है और आप कोई बीमार हो जाए घर में, तो एफडी को ब्रेक करने में थोड़ा समय लगता है, तो उस समय लिक्विडिटी की काफी कमी होती है। तो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है कि वो जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसकी लिक्विडिटी अच्छी हो, वो जब चाहे पैसा वहां से विड्रॉ कर सके, इजी पे में अपने को कैश में कन्वर्जन करवा सके। सो प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बैंक लेंडिंग। एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। Banks are profit earning institutions. They lend their funds to earn income, out of which they pay interest to depositors, incur operational expenses, and earn profit for distribution to owners.
So a style of credit. Next topic is a style of credit. You can see on the screen कि बैंक किस तरह से क्रेडिट प्रोवाइड करती है, बैंक किस तरह से लोन देती है, कितने टाइप्स की लोन होती है, वही स्टाइल ऑफ क्रेडिट। लोन्स एंड एडवांसेस में आप देखेंगे ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन, पर्सनल लोन, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ब्रिज लोन्स, कंपोजिट लोन्स, अदर इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड्स, एजुकेशनल लोन्स एंड हाउसिंग लोन्स एटसेट्रा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो फर्स्ट लोन एंड एडवांसेस में आप देख रहे हैं ओवरड्राफ्ट। तो दिस इज एक्सटेंडेड to current account holder to be drawn more than the debit balance of the bank account. Cash credit or bank overdraft facility is mainly used when a business has a cash crunch and must settle sudden liabilities. So overdraft facility bank provide करती है on the behalf of customers. अगर कस्टमर लॉयल है और अगर उसने कोई चेक ऐसा वहां पे दे दिया है किसी को जिसका कि अकाउंट्स में उसके पास पैसा अवेलेबल ही नहीं है, तो उस कंडीशन में वो चेक बाउंस करेगा और बाउंस होने पे जो चेक ओनर है उस पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो बैंक उस कंडीशन में सोचती है कि हमारा लॉयल कस्टमर है, इंपॉर्टेंट कस्टमर है, हो सकता है कि इसके अकाउंट्स में पैसा अवेलेबल ना हो, तो वहां पे बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स चेक का पेमेंट कर देती है और जो भी अमाउंट उसने पेमेंट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ दिस कस्टमर। सो नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो कस्टमर पैसा जमा करवाएगा वो ओवरड्राफ्ट उससे क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो यहां पे कस्टमर की सेफ्टी के लिए, कस्टमर पे कोई लीगल एक्शन ना ले सके जो लॉयल कस्टमर है, तो वो ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट रखता है। इस तरह से वो लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है टू द कस्टमर्स। सेकंड वन इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स मीन्स कॉर्पोरेट कंपनीज, not individual, not personal, only business purposes। कैश क्रेडिट जब भी दिया जाता है ओनली बिजनेस पर्पस के लिए दिया जाता है, बिजनेस को एनहांस करने के लिए, बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए बैंक उसको सपोर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। एक लिमिट आपको प्रोवाइड कर देती है कि आप इस लिमिट तक पैसे बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, आप ले सकते हैं और उस पर जितना आपने विड्रॉ किया है बैंक से बस उतना ही अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो कैश क्रेडिट और लोन बोथ आर डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट वन इज लोन फॉर पर्सनल पर्पस। शॉर्ट टर्म लोन, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन्स आर गिवन टू मीट द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल लोन्स are taken to purchase consumer goods, electronics, houses, vehicles, etc. Loan for business or profession purpose. These loans are offered to meet the needs of the business. It can be a working capital loan or cash credit facility. To meet a short-term liquidity crunch, companies borrow money for major fixed asset expansion, business diversification into different product portfolios and varied customer segments. The purpose of lending money will be different for different businesses based on their requirement. So आप बिजनेस एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है, प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाह रहा है, तो ये सारे जो फंक्शन है उसमें ह्यूज कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है। सो आपको वहां पे देखना है कि किस वे से आप लोन को लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, वो डिपेंड करता है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिक्योरिटी
अगर हम सिक्योरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन करना चाहें तो दैट इज सिक्योर्ड लोन. Secured loan are secured against collateral, a guarantee given to the bank by the third party. Loans can be secured against property, plant and machinery and equipment, debtors, stock, fixed deposits, and any other asset which can be sold or liquidation by the bank in case of non-payment of installment on the part of the borrower. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर लोन आपको ऐसे तो बैंक देती नहीं है, आप कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे उसके पास कुछ जमा करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज आपको लोन प्रोवाइड करता है. लाइक मशीनरी के अगेंस्ट में हो सकता है या स्टॉक के अगेंस्ट में हो सकता है, ताकि अगर आप डिफॉल्टर हो गए, पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केसेस में बैंक उन कोलेट्रल को सेल करके जो आपका लोन का अमाउंट है उसका कुछ पार्ट को वो रिकवरी कर सके और लॉस से बच सके. सो मोस्टली जितने भी केसेस आप देखेंगे वो सिक्योर्ड लोन ही प्रोवाइड किया जाता है. वहां पे अनसिक्योर्ड लोन जहां पे कोई भी मॉर्गेज फैसिलिटी, मॉर्गेज या फिर कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक आपसे नहीं लेती है और डायरेक्टली आपको हेल्प करती है विदाउट एनी collateral, without any property, without any machinery, without any stock, etc. So unsecured loans are neither secured against any asset or any guarantee is provided to the bank. A borrower with a great history of the settlement of dues, good credit rating and sound financial records will generally get on unsecured loan. Unsecured loans are usually provided by a small banks and relatives. So, without any collateral, जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, देन वो सिविल स्कोर के बेसिस पे करती है. ऑन द बेसिस ऑफ सिविल स्कोर आपका क्रेडिट वर्दीनेस प्रीवियस में कैसा रहा है, प्रीवियस में आपने किस तरह से एक्ट किया है, आपने टाइम टू टाइम रीपे किया है या नहीं रीपे किया है, ईएमआई आपने टाइम टू टाइम दिया है या नहीं दिया है, ये सब आपके क्रेडिट वर्दीनेस को हेल्दी बनाते हैं और आपका सिविल स्कोर स्ट्रांग होता है. पर्सनल अगर लोन की पर्सनल अगर हम क्रेडिट वर्दीनेस की बात करें तो सिविल स्कोर होता है, और अगर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वर्दीनेस की बात करें तो आईसीआरए, सीएआरई, क्रिसिल, ये सब आपका क्रेडिट वर्दीनेस एजेंसी है जो आपको क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है. तो अनसिक्योर्ड लोन उन्हीं को मिल पाएगा जिनका क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है, उन्हीं को मिल पाएगा. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन, mid-term loan and long-term loan. Short-term loan consists credit card loans, cash credit facility or bank overdraft facility. It is a short-term loan. Bank accounts, cash credit or bank overdraft facility is mainly used when a business has a cash crunch and must settle sudden liabilities. Working capital loans, it is also short-term, because working capital is also short-term concept. So second one is long-term loan. So these loans are given for longer, say 3 to 5 years or more than that. These loans are provided for the expansion of business, diversification of product portfolio or business, substantially investment in fixed assets and real estate, where the cost to buy such asset or investment is so vast that repayment of the same within a year is not possible. Purpose of bank credit: educational loans, housing loans, vehicles loans, vendor financing, letter of credit facility, etc. So advantage of these loans are: the loan is not repayable on demand, terms of repayment and interest rate at pre-decided, hence cash flows can be managed better.
Second one is it helps businesses and individual when there is a need for funds. Third one is interest payment can be negotiated and paid only for a certain period, and during the balance, the borrower will pay only the principal. The cost of debt is lower than the cost of equity. Hence the appropriate proportion of debt in the portfolio enhances returns to equity shareholders by leveraging the cost of debt. And disadvantage of this concept are a borrower may be surrender ownership of an asset if installments are not paid in time. Bank charges one-time processing fee that need to be paid upfront. There is a prepayment penalty if the borrower pays the loan in advance. Companies should maintain the right debt equity ratio. If there is a significant reliance on loans by the companies, it will be difficult to pay interest in the event of a crisis. So these are advantages and disadvantages of these types of loans provided by the bank. Next topic is modes of creating charge over asset. मीन्स बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, बट उसके अगेंस्ट में वो एसेट को अपने ऊपर, एसेट का राइट अपने ऊपर रखता है, एसेट का ओनरशिप होल्ड करेगा, पोजीशन होल्ड आपको दे देगा, लेकिन ओनरशिप होल्ड करेगा खुद बैंक. लाइक प्लेज, हाइपोथिकेशन. आप जो कार लोन लेते हैं तो कार लोन लेके जाते हैं तो वो हाइपोथिकेशन है, क्योंकि कार का ओनर बैंक है जब तक कि आप लास्ट ईएमआई उसका पेमेंट नहीं कर देते. So it is very important concept, modes of creating charge over assets: pledge, hypothesis, mortgage, line, assignment. So first is pledge. Pledge is used when the lender takes actual possession of asset, that is certificates, goods, etc. Such securities or goods are movable securities. In this case, the pledgee retains the possession of the goods until the pledger repays the entire debt amount. जब तक आप पूरी तरीके से ईएमआई का अमाउंट वापस नहीं कर देंगे तब तक वो वापस एसेट आपका नहीं होगा, ओनरशिप आपका ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि पोजीशन आपके पास है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है. कोई भी डिफॉल्ट आप करेंगे तो आपको वो वापस ले लेगा, एसेट जो भी आपको दिया है लोन पे वो वापस ले लेगा, और कोई भी कॉम्पनसेशन आपको पे नहीं करेगा. So next is hypothecation. Hypothecation is used for creating charge against the security of movable assets, but here the possession of the security remains with the borrower itself. Thus, in case of default by the borrower, the lender will have to first take possession of the security and then sell the same. The best example of this concept is car loan, housing loan, etc. Mortgage. Mortgage is used for creating charge against immovable property, which includes land, building, or anything that is attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. So mortgage यहां पे जो भी होगा वो आपका फिक्स्ड एसेट्स होगा, लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज लाइन. Line, that is a right to retain the goods. आप सिंपल एग्जांपल इसका है कि आपने किसी ऑडिटर से कोई काम करवाया है तो आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन उसको दे दिया होगा. अब ऑडिटर को जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो आपका डॉक्यूमेंट वापस नहीं करेगा. उसके पास राइट है, राइट ऑफ लाइन है कि वो वहां पे आपको
रोक लेगा सारा डॉक्यूमेंट जब तक कि आप इसको पेमेंट नहीं करेंगे। सो मॉर्गेज लाइन जो है वो बहुत ही इसेंशियल राइट है उनके लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और उनके अगेंस्ट में उनको पेमेंट नहीं मिलता है। So line is creating charge over assets. Assignment. Assignment is it is a type of loan basically. Assignment. So it is against on collateral or mortgage. So next one is secured advances. Goods and it includes goods and commodities, documents of title to goods, a stock exchange, securities, life insurance policies, fixed deposit receipts. Next one is real estates, next book dates and supply bills. Purchase and discounting of bills. Purchase and discounting of bills of exchange is another way bank provide credit to business entities. Advantage of discounting of bills. A banker derives the following advantage by discounting the bills of exchange: safety of funds lent, certainty of payment, facility of rediscounting of bills, a stability in the value of bills, and profitability. And next topic is the revised guidelines of RBI on discounting of bill. Banks may sanction working capital limits as also bill limits to borrower after proper appraisal of their credit needs and in accordance with the loan policy as approved by the board of directors. Banks are required to open letter of credit and purchase, discount, negotiate bills under letter of credits only in respect of genuine commercial and trade transactions of their borrower constituents who have been sanctioned regular credit facilities by them. For the purpose of credit exposures, will purchase discounted negotiated under LCs, letter of credits, or otherwise would be reckoned as exposure on the bank's borrower constituent. Accordingly, the exposure should attract a risk weight appropriate to the borrower constituent for a capital adequacy purpose. Banks have been permitted to exercise their commercial judgment in discounting of bills of services sector. Banks would need to ensure that actual services are rendered, the accommodation bill are not discounted. Services sectors bills should not be eligible for rediscounting. Consortium advances by sole bank, by multiple bank. Consortium advances means अगर बैंक इंडिविजुअली आपको लोन प्रोवाइड कर रही है या बहुत सारे बैंक मिलके आपको लोन प्रोवाइड करती है, उसको कंसोर्टियम हम लोग बोलते हैं। सिंडिकेशन बेसिस होता है, 3-4 मिलकर अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है, सिंडिकेशन हो गया वो। Syndication of credit. I will discuss this topic in next class. So 1 unit and 3 units are completed, but 1 units are not completed. So I will discuss it in next class. That is credit worthiness of borrowers. So thank you.